Yes, come in. Good morning. Please take your seat. Mr. Vikas, you have to appear on 14th of March. Are you coming for the first time? Yes, sir. Okay. ये क्या प्रोडक्शन इसमें क्या एमई कर रहे हैं आप? Yes, sir. M.Tech, sir. M.Tech. Yes. Have you decided your project work? Yes, sir. What is the project work? Sir, my project work is like analysis of anisotropic materials regarding forming limit diagrams. Regarding? Forming limit diagram or analysis of forming limit diagram of anisotropic materials. You just explain what is that anisotropic material? Sir, in isotropic materials, the properties. Anisotropic, you said anisotropic. Yes, sir. In anisotropic materials, the properties are different in different directions, sir. In different directions. Poisson ratio is also different or same? Sir, Poisson's ratio. Poisson's ratio will also be different because that is property of the material. Good. Name any material which is anisotropic with different Poisson ratio in two directions at least. Sir, just give me one example. So the materials which I have chosen for my project was aluminum and titanium, sir. Why you have chosen this aluminum, titanium? Sir, because aluminum and titanium has a large scope in the aerospace industry and automobile sector, sir. If you take aluminum plus copper, what type of solution you get? No idea. What is solid solution? Solids in which, sir, two solids are mixed. One is solvent and one is solute, sir. Any example? Like, sir, ferrite, sir, iron ferrite, in which carbon is solute. I mean, in iron, carbon is. There are two atoms which are of more or less same size. Then they make solid. So copper plus nickel. Their atomic size is more or less different. Same. They make solid solution. What is interstitial position of carbon in steel? Didn't get, sir. Interstitial compound. Of solid compound तो भी आपको बतलाया ना solid solution. Interstitial. Iron plus carbon atom. Yes, sir. That is like ferrite, sir, and pearlite, sir. What production techniques you study? Yes, sir. Production techniques. Additive manufacturing, sir. Techniques, what are the casting hai? Yes, sir. Forging hai. Casting, forging, rolling, sir, and extrusions. There is one forging techniques through which you make steel balls. Can you explain? Steel balls which are used in ball bearing, they are made by special forging process. It is spherical in shape. So I'm not able to recall, but I know the rolling, sir. Like by using screw rolling, we manufacture. That is also one process. What is upset forging? In the upset forging, sir, we get the desired shape by hammering the die on the. Hammering method. Press forging? Yes, sir. Press forging, press. In the press forging, we squeeze the metal between the two dies to get the desired shapes. Hydraulic pressure. Yes, sir. Give any example where press forging is used. Example, I'm not able to recall, sir. Car bodies, they are made by press forging. Yes, sir. Extrusion, do you know extrusion? Yes, sir. In extrusion, sir, the
workpiece is squeezed a bit and extruded out. through a die of which we get the desired shape. These drawn tubes. Yes, sir. The tubes which we get are from extrusion process. How they are drawn with the help of extrusion? Sir, there is a die opening, and with the help of the ram pressure, and the material get extruded through that die opening, and the material flows over mandrel. आप ट्यूब बना रहे हैं ना? Yes sir, yes sir. हाँ, it will be over the mandrel. चलिए ठीक है आप. हाँ जी विकास. Yes sir. आप कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल. What is additive manufacturing you were talking about? Sir, in additive manufacturing, we manufacture the product layer by layer, sir. So we get better product in that manner, sir. क्या कोई इसका खास नाम बताइए इसका? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसके नाम भी होते हैं? Yes sir, fused deposition method, sir. How about 3D? 3D prototyping, sir. क्या कहते हैं उसको? 3D प्रिंटिंग. 3D printing, sir. Yes, 3D printer is used to. मैन्युफैक्चरिंग ही तो है. Yes sir. क्या होता है 3D प्रिंटिंग? एनी आइडिया? Yes, in that, sir, we get the objects 3D model, sir. Then it gets slides with the help of software, sir. Then after making that, sir, the programming is fed into the 3D printer, sir, which make the product layer by layers. ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन बताइए 3D प्रिंटिंग का. Sir, we use in customized products, sir, like sir, someone want to make a product according to his. नहीं कोई नाम, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए ना, ऐसे जनरल नहीं. I'm not able to recall, जो स्पेशल जिसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो तो चलो बन जाएंगे. ये आपके इम्प्लांट्स जितने भी होते हैं. Yes sir. ये सब 3D प्रिंटिंग से बनते हैं. In medical mainly it is very important. सारे इम्प्लांट्स. Yes. इम्प्लांट्स एक नहीं, बहुत जगह इम्प्लांट्स लगते हैं बॉडी में. Yes sir. और कुछ इसके अलावा? चाइना में तो 3D प्रिंटिंग इतनी यूज होती है, स्ट्रक्चर्स में यूज हो सकती है कि नहीं? Yes sir, it can be. कौन से स्ट्रक्चर्स में? Decorative items it can be used, sir, to make decorative items. Even housing. Yes. हाउसिंग में भी 3D प्रिंटिंग से आजकल हाउसेस बनते हैं. जो पहले महीनों में बनते थे आजकल वो एक दिन में बनते हैं. Yes sir. तो चलिए इसको छोड़िए, अब आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं. व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? Sir, ergonomics tells us how we should design so that according to the people's easiness, sir. Like how will we use that so that peoples can use that in a comfort way. Like बाजार में आप जाएंगे, they will say it is an ergonomic chair. क्या मतलब है उसका? That means it is according the chair is designed according to the human, like sir, how he will feel the comfort by sitting on. तो जनरल नहीं, ergonomic chair में किस चीज़ का comfort देखा जाएगा? Sir, it should not give the like body pain should not be there, sir. Well, नहीं, मेनली ये जो आपकी बैक में जो पेन होते हैं ना. yes sir. इसके लिए ergonomics चेयर बनती हैं. yes sir. so that जैसे आप बैठोगे ना वो आगे पीछे होती रहती हैं ऐसे. yes sir. अब ये चेयर ergonomic नहीं है जिसमें हम बैठे हैं. yes ना sir. आपकी चेयर है. तो ergonomics एक तो ये हो गया. और if we have to study ergonomics for like sir on the shop floor, what do you mean by ergonomics? Sir, like the design of we have to design the keyboard, sir. So according to relieve the stress of the hands, so we should design the
keyboards, क्या बोले आप? Keyboards? keyboard buttons, sir, in order to No. relieve the Ergonomics doesn't mean only that. Ergonomics includes even environment, ventilation, illumination, ease of working. ये सब तो इंडस्ट्रियल में है आजकल के, तो यही होता है। अच्छा चलिए, और क्या सब्जेक्ट आपने इसके अलावा? ये तो एमटेक का है आपका। Yes, sir. बीटेक लेवल पे क्या प्रिपेयर क्यों सारे, क्यों इंटरव्यू बीटेक लेवल का होता है मोस्टली? Yes, sir. I studied all the subjects, sir. ऐसे नहीं बोलना चाहिए। Strength of materials, You are not encyclopedia, thermodynamics, sir. Nobody can be master in all subjects. कोई भी नहीं हो सकता, कोई कितना भी कह ले। Thermodynamics and strength of materials. Thermodynamics और Strength of materials, sir. strength of materials, बस। And FM, sir, of fluid mechanics. हाँ, तो ये जो भी आप नाम लोगे फिर उसमें परफेक्ट होना चाहिए। मतलब परफेक्ट मीन्स यू शुड नो क्वाइट अ बिट। Yes, sir. परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, खैर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपने बोल दिया है। Yes, sir. इसमें विस्कोसिटी जो होती है फ्लूइड की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। Yes, होती है sir. ना? Yes, sir. इसके ऊपर बताइए मुझे, विस्कोसिटी वेरिएशन होते हैं डिफरेंट फ्लूइड्स में। Why Yes, is sir. it so? Why viscosity of different fluids is different? Because, sir, the bonding between the molecules is different for different fluids, sir. Like in fluids, sir, like water, sir, the viscosity is because of the interatomic bonding between the water molecules and the surface over which it is flowing. But like in gases, the viscosity is due to the collision of the gas molecules. So it will differ in different fluid materials. Viscosity basically means what? Resistance? It is the resistance offered by one layer over the other. When one layer is flowing over the other, it is the resistance offered by one layer over the others. Okay. Now tell me, in fluid mechanics, as you have said, Yes, sir. we use dimensional analysis. Yes, sir. किया होगा आपने भी शायद। Yes, sir. What are the advantages of dimensional analysis, or why do we do it? So to get the relationship between different parameters, we do the dimensional analysis, sir. Like how the properties are changing with respect to the other parameters, sir. हो गया, चलो वो तो आपने कुछ पैरामीटर्स निकाल लिए। Yes, sir. Dimensionless. Yes, sir. यही शायद आप कहना चाह रहे हैं। Yes, sir. है ना? But what is the use of getting a few parameters instead? Sir, we can design, in the design these parameters will be used. Like we can use the prototypes, models for making the prototypes, and instead of testing on the actual material, sir, like on actual prototype, we can use it on the small models. Model of it. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. जैसे हमने एक कार डिजाइन करनी है, कार Yes, की sir. आउटर शेप, Yes, sir. अंदर के इंजन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, Yes, sir. तो उसका आपने एक मॉडल बना लिया। Yes, sir. ठीक है ना? यही कह रहे हो आप? Yes, sir. You make a small model, maybe 1/10 or whatever size you Yes, choose. sir. फिर उसको टेस्ट कहाँ करेंगे? Because when you are testing the outside, Yes, it sir. means you are testing about drag. Yes, sir. Because car should offer, Sir. it should offer minimum drag so that fuel consumption is less. Yes, sir. तो इसको टेस्ट कहाँ करेंगे? कोई ऐसा? Sir, we will provide the same in the laboratory, sir, like wind tunnel, sir. Wind tunnel. अच्छा. और So we will make the same conditions as it will be facing in the actual environment, sir. And same conditions कैसे लाओगे? I mean, sir, like by dimensional analysis, we will calculate, like, sir, the Reynolds number should be equal, sir, or Froude number should be equal. We will check for that, sir, and according to we will decide, sir. अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए last question. Supposing I don't have a wind tunnel Yes, sir. in my
फैसिलिटी कॉलेज है या जो भी है यूनिवर्सिटी है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ डोंट हैव विंड टनल्स, yes sir, ठीक है। और कई यूनिवर्सिटीज़ में वाटर चैनल्स होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है तो दे हैव ए वाटर चैनल। क्या हम ये मॉडल जो आपने बोला विंड टनल में जो टेस्ट करना है, क्या हम इसको वाटर चैनल में भी टेस्ट कर सकते हैं? हालांकि कार जो है पानी में नहीं चलती है, yes sir, ये तो सड़क पे चल रही है, yes पर sir, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो आप बोल रहे हो विंड टनल वाली। तो वाटर चैनल है, कैन वी मेक ए मॉडल ऑफ ए कार एंड टेस्ट इट इन ए वाटर चैनल कि नहीं? yes sir, we can sir, वी कैन। yes क्या sir. क्या करेंगे? Sir, like we will make the water flow through the model which we are using. नॉट थ्रू द मॉडल, I mean over the models, over the model, and then we will see how the properties are changing. Like we will equalize the dimensionless numbers. With लाइक respect, रेनॉल्ड्स नंबर। yes sir, हाँ ठीक है, मतलब वी कैन डू इट। yes इट sir, डजंट मैटर दैट कि उसको उसी में ही टेस्ट करना है, कहीं भी कर सकते yes sir, हैं। ओके गुड। Supposing we have got this job, यहाँ yes sir, हमको होल ड्रिल करना है. yes sir. How shall we design a drill jig Sir, for this component? first we will decide the diameter of the hole, sir. Which That is given on the drawing. 10 millimeter का hole है. yes, I'm sir. talking how do we design a drill jig for this? Sorry, sir, not able to recall. आपने टूल डिज़ाइन नहीं पढ़ा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में? No, sir. आप टूल डिज़ाइन नहीं पढ़ते हो? Actually, I haven't studied that subject. Was not taken by me, sir. That was in electives. अच्छा चलो कोई बात नहीं. ये बताओ कि there is a gap of 4 years between your engineering and starting of M.Tech. Yes, sir. 4 साल क्या उसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या काम किया आपने? Sir, I was completely focused on preparing the IES exam, sir. Then Completely focused on IAS. yes, sir. अच्छा उसके बाद में then you started M.Tech after 4 years. Yes, sir. After 4 years, I thought, sir, that I should gain some extra knowledge parallelly with the preparation of the IES. Fair enough. Carbide tooling का नाम सुना है आपने? Yes, sir. Have you studied something about it? Yes, sir. आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत? Carbide tool, yes, sir. हाँ, क्या होता है उसमें, क्या मटेरियल्स होते हैं? In the carbide tool, we use tungsten carbide, sir. टंगस्टन कार्बाइड, और साथ में कुछ और? Uh, Not able to recall, sir. Not aware. Okay. What is preset tooling? CNC मशीन का चैप्टर पढ़ा है आपने? Yes, sir. उसमें प्रीसेट टूलिंग होती है, टूल को प्रीसेट करते हैं. Yes, sir. Have you heard? Do you know what it is? No, sir. No. No. Okay, doesn't matter. Do you know what is an adiabatic process? Yes, sir. क्या होता है? The adiabatic process in which the heat transfer is negligible, sir. There is It is no heat. negligible. Is not. I mean, there is no heat transfer. There is no heat across the transfer. board. And what is isothermal process? In the isothermal process, the temperature remains the constant. Temperature remains constant. Okay. Which one is? There are two processes: isothermal and adiabatic. Which one is which? It's a PV diagram. Yes, sir. बता सकते हैं कौन सा क्या है? Yes, sir. बताइए. Sir. वो तो मैंने लिख दिया ना, 1 2 and 1 2 dash. Yes, sir. Which one is what? Sir, this one will be the constant temperature, and this will be the adiabatic, sir. कैसे बोलते हैं? How do you say so? That? Sir, when we write this equation, sir, by in this one we will calculate the dp by dv, sir. I mean, we will calculate the slope of the curve, sir. And sir, the slope of the adiabatic process is more as compared to the isothermal process, sir, on the PV diagram. More. Okay, good. ये नीचे एक पिस्टन बनाया है बीच में. Yes, sir. इसमें एक होल है सेंटर में. Yes, sir. ये क्या काम आता है? Didn't get. Can you? पिस्टन में एक होल है ऐसे. नहीं ये बीच में होगा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्यों, क्या काम आता है ये होल?
फर्स्ट ऑफ ऑल होल होता भी है या नहीं होता? एनी आइडिया? No, sir, I haven't नो heard आइडिया। like ठीक, there कोई is. बात नहीं। नीचे एक जॉब है, राउंड जॉब, डायमीटर A and डायमीटर B. Yes, sir. They should be concentric to each other within 10 microns. Yes, How sir. do you show it on the drawing? So, This one, sir. Then we can show the diameters like. ठीक है। ओके, यू प्ले क्रिकेट। Yes, sir. तो अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के रूल्स में? Sir, I haven't heard about like there are any कोई changes. DRS के केस में चेंज हुआ हो, कोई LBW डिसीजन के केस में रूल चेंज हुआ हो? No, sir. नहीं, आपको नहीं आइडिया। No, sir. अभी इंडिया रिसेंटली किसी टेस्ट सीरीज में या किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है? Yes, sir. या कर चुकी है? Yes, sir. कौन से? They are playing with Sri Lanka, sir, in India. श्रीलंका, इन इंडिया। Yes, sir. कौन से मैचेस चल रहे हैं, कहाँ पे Sir, है? first test is going on in Mohali, sir. इन Mohali, sir. मोहाली। ओके ओके ओके। मोहाली का कुछ और नाम है ना? मोहाली तो उसका ओरिजिनल नेम तो कुछ और ही दिया हुआ है ना? मोहाली तो मतलब पॉपुलर नेम है, Sir, उसको किसी और original. नाम से जाना जाता है। No, sir. इट Original. इज टू ऑनर सम मार्टायर्स। Not aware about कौन सा? that, sir. आज ही शुरू हुआ है टेस्ट मैच या चल रहा है 2-3 No, दिन? sir. It was started on 4th of March. ओके, तो क्या करंट पोजीशन है उसमें? Sir, Sri Lanka was bowled out for 174 and they have been given follow-ons. तो इंडिया ने कितने बनाए? फॉलो ऑन तो तभी मिलता ना जब इंडिया का स्कोर ज़्यादा होगा। तो Yes, sir. इंडिया का स्कोर कितना था? 576, sir. हु वर द मेन रन स्कोरर्स? Ravindra Jadeja, sir. कितने रन बनाए उसने? 175, sir. ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल इन द वेक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? Sir, I क्या think होगा ये पेट्रोल और डीजल का? sir, petrol and diesels will be used minimum in order to maintain the sustainable development, and electric will dominate over it when, but it will take the जीरो time. नहीं होगा पेट्रोल और डीजल का यूसेज क्या? Sir, I think it will not be zero, sir. कहाँ पे इनको ज़रूरी यूज़ करना ही पड़ेगा? Where will they still be used? Where will petrol and diesel or such fuels still continue to be used? Sir, because the electric vehicles are very costly these days, so I think So once you have a scale of production, automatically the cost per unit will start getting rationalized. No? yes, sir. नहीं, No, sir. कहीं तो यूज होगा ऐसे। कहीं तो यूज कंटिन्यू होता रहेगा, रिप्लेस ही नहीं कर सकते उसको। कहाँ पे इसको रिप्लेस नहीं कर सकते? सोचो, थोड़ा सा सोचो, कहाँ कहाँ पे यूज होता है और उनमें कौन सा ऐसा है यूजेज जिसको नहीं हम रिप्लेस कर सकते? Not able to recall. कैन sir. वी रिप्लेस इट फॉर मूविंग शिप्स, No, sir. एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट्स? Yes. ओके, राइट। इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th September, sir. 15 सितंबर। आपके किसी भी एरिया के साथ उसका कनेक्ट है? Yes, sir. I have been given the degree from VTU, Visveswara Technological University, and कौन है ये विश्वेश्वरैया? sir, they were Sir Mox Gundam Visveswara. He was a civil engineer, and he was also the 19th Diwan of Mysore. He was also given the Knighted of British Indian Empire by the George V King, and he also got the Bharat Ratna in 1955. He was also the main chief engineer of Krishna Raja Sagar Dam. ओके ओके। किसी और इंजीनियर को भी भारत रत्न मिला है
इनके अलावा? Sir, that I am not aware, sir. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला? Don't know, sir. कोई बात नहीं, ठीक है सर। Thank you. Good. Thank you, sir. Just wait. Yes, sir. बैठो बैठो। बैठिए बैठिए। As per our assessment, you are getting 125 out of 200 marks. But you are slow in replying. It shows that you are taking time to reply. पॉज कम करो, Yes, sir. ज्यादा ना लेके उसको रिड्यूस करो, Yes, sir. इट विल गेट बेटर। वैसे अच्छा है कि गलत जवाब दे रहे थे तो ठीक है। हाँ, गलत जवाब नहीं दे रहे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ, Yes, sir. बहुत अच्छा है उसमें। गलत जवाब दे रहे थे तो रुक के देना ज़्यादा अच्छा है। Yes, sir. भाई थोड़ा इम्प्रूव कर लो, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। Yes, sir. 19 में जो तुमने यूपीएससी इंटरव्यू दिया था उसमें कितने मार्क्स मिले थे तुमको? 95, sir. बहुत कम मिले थे ना? Yes, sir. किस वजह से कम मिले? Sir, at that time confidence was very low and I was very nervous in front of the. अगर तुम्हारे अभी भी उसमें थोड़ा 120 कम आते है। तो सिलेक्शन हो जाती कि नहीं हो जाती? Yes, sir. थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा सर ने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। बिल्कुल एग्जैक्ट समराइज करके बताया। Yes, sir. ये आईआईटी रुड़की जो है इसका सबसे पहले क्या नाम था जब शुरू हुआ था कॉलेज? Sir, it was थॉमसन। Thomson Engineering College, sir. और Yes, sir. इंजीनियरिंग होता था पहले। Yes, sir. And in 2005, it got IIT, अब क्या नाम है? Indian Institute of Technology, Roorkee, sir. स्पेशियस कैंपस, बहुत अच्छा। आपने बहुत वहाँ बड़ा campus। बेकरी भी अपनी है ना? यूनिवर्सिटी But I have never visited my campus, sir, हाँ? नहीं, यूनिवर्सिटी और रुड़की में because of Corona, sir. हाँ? I have not been called to अच्छा, the कभी college. देखा ही नहीं। ऑटोनोमस। अरे बड़ा अच्छा कैंपस है। कौन सा? ये जो उसकी जो है ना, आईआईटी रुड़की बनने से पहले तो रुड़की यूनिवर्सिटी में उसमें नहीं जाते थे ना, बेस्ट नहीं में तो नहीं ड्रेस कोड कॉलेज में होता। यूनिवर्सिटी Yes, sir. रुड़की यूनिवर्सिटी अब तो सब खत्म हो है ही गया। नहीं ना। हाँ, अब नहीं Yes, होती। उनकी अपनी आईआईटी ये रुड़की में हाँ ड्रेस कोड होता था। जब आप जाएंगे ना मेस में, एक ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। जाने ही नहीं। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. विश यू द बेस्ट। Thank you, sir. गेट सिलेक्टेड। Thank you, sir.